Good morning, students. This video session is for class 2nd students, subject reasoning, chapter number 10, and the name of the chapter is analogy, lecture number 10. Now beta, what do you mean by analogy? Analogy means similarity. Analogy का मतलब होता है समानता. Okay? In these type of questions, two objects related in some way are given. हमें इन क्वेश्चंस में दो ऑब्जेक्ट्स दिए होते हैं जो किसी भी तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं एंड थर्ड ऑब्जेक्ट इज आल्सो गिवन विथ 4 ऑल्टरनेटिव्स और हमें थर्ड ऑब्जेक्ट दिया होता है जिसके साथ 4 ऑप्शंस होते हैं. ठीक है, you have to find out which one of the alternative bears the same relation with the third object as first and second objects are related. तो जिस तरीके से फर्स्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट आपस में रिलेटेड हैं, हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि जो थर्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कौन से ऑल्टरनेटिव्स के साथ सेम रिलेशन बना रहा है. अंडरस्टूड बेटा? सो लेट्स सी विद एन एग्जाम्पल. So here in example number 1, it is given calf, cow and kitten dash. So here calf and cow is related with some way. Okay, so we have to write the same way here. Okay, so what are our options? That is A dog, B puppy, C horse, D cat. So let's find out its solution. Calf and cow. You know that calf is the young one of cow. Okay, or baby of cow. So whose baby is kitten? किसका baby है kitten? That is of cat. Okay, so here option number D is correct. Understood beta? How we have to find out the relationship? Calf, cow and kitten, cat. Understood beta? Now homework questions. In the same way you have to find out. Okay, in question number 1 it is given animal, bird, dog, dash. In question number 2, hand, gloves, legs, dash. In question number 3, school, teachers, hospital, dash. Okay, you have options and you have to find out the correct option. Okay, now in question number 4, sea, ship, road, dash. In number 5, tiger, forest, fish, dash. Now the homework solution of chapter number 9. Puzzles, blood relation. Now in question number 1, it is given if A is the brother of B and B's son is Z. अगर A जो है वो B का भाई है और B का बेटा Z है, how A is related to Z. तो हमें बताना है कि A और Z का क्या रिलेशन है. So here options are A father son, B uncle, C brothers and D siblings. Who is siblings बेटा? जो same father के जो बच्चे होते हैं, brother and sister or brother or brother, they are siblings. Okay. So here in the solution, we have given A and B. So what is the relationship between A and B? They both are brothers. Okay. And B's son is Z. तो जो B का बेटा है वो कौन है? Z. So how A and Z is related to each other? So Z जो है वो B का बेटा है और B का भाई कौन है? A. तो इन दोनों का रिलेशन क्या हो जाएगा? अंकल. Z जो है उसके अंकल कौन है? A. Understood बेटा? How A is related to Z? That is A is the uncle of Z. Understood? So option B is correct. Now in question number 2, it is given if A is the son of B. अगर A B का बेटा है and C is B's wife और C जो है वो B की wife है, how C and A are related. Okay, so there are options A father son, B brothers,
C, mother, son, and D, brother, sister. So let's start. So beta, first of all, we will write B. Okay. And what is the relationship between B and A? That A is the son of B. So here we will write A. And what is the relationship? That A is the son of B. And the second is given, C is B's wife. C जो है वो B की क्या है? Wife. तो हम यहाँ पर C को ले लेते हैं. Okay. And what is the relationship between B and C? That C is the wife of B. So now what we have to find out? We have to find out that how C and A are related. So there is a relationship between C and A, that is mother and son. Okay. So option C is correct. Understood, beta? Now in question number 3 it is given if A is the father of B. अगर A जो है वो B के father हैं and C is the father of A और C जो है वो A के father हैं, how C and B are related. Okay, so first of all we will write A because A is given 2 times. Okay, so who is the father of B? That is A. Okay, so here we are writing B. And C is the father of A. So here we will write C. Okay. Now, how C and B are related? So here B is the son, A is the father. Okay. And C is the father of A. It means C is the grandfather of B. Understood, beta? So here we will write grandfather. किसके हैं ये सन हो गया, ये ए जो है इसके फादर और सी जो है वो इस बी यानी बी के क्या है वो ग्रैंडफादर. अंडरस्टूड. सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड बी? दैट इज ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन. ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी. अगर A जो है वो B का भाई है एंड C इज द सन ऑफ B और C जो है वो B का सन है यानी बेटा है. हाउ B एंड C आर रिलेटेड? फादर सन, मदर सन, ब्रदर्स और सिस्टर्स. सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट A. A किसका ब्रदर है बेटा? B का. तो हमने यहाँ पर लिख दिया B. These both are brothers, A and B. Now C is the son of B. अब son of B है तो यहाँ पर हम लगा देंगे. इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? ये B इसके फादर हो गए और C जो है वो इसके सन हो गया. Now how B and C are related? तो ये सन है अगर तो ये इसके फादर हो गए. तो what is the relationship between B and C? That father and son. Okay, so option A is correct. Father, son. Now in question number 5, it is given if C has 2 sons. अगर C के 2 बेटे हैं A and B and B has 2 sons X and Y. How C and Y are related? तो हमें बताना है कि C और Y जो है वो कैसे रिलेट कर रहे हैं. Options are A father son, B mother son, C brothers and D grandfather grandson. So first of all we will write C because C has 2 sons and the name of those sons are A and B. So here A and here B. Okay, ये दोनों किसके बेटे हैं? C के. Now it is given B has 2 sons. तो ये जो B है इसके आगे 2 बेटे हैं और उनका नाम क्या है? X and Y. ओके, अब X और Y के जो पापा हैं वो कौन है? B. तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फादर. ओके, एंड अब B के फादर कौन है? C. तो वो जो B के फादर हैं वो Y के क्या लगेंगे? ग्रैंडफादर. ओके, सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन C and Y? That is grandfather grandson.
Understood? So option D is correct. Okay, beta. Thank you.